subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tangra show. Today is my 103rd episode. I'm so glad, so excited. Recently we have completed our 100 episodes and today we are going to have a great personality with us, Professor KDS Bedi. Bedi sir के बारे में बात करूँ तो he is a very vibrant personality and most of the people in Chandigarh, Mohali, they know him very well. Very dynamic personality. एक identity है इनकी luxury brand management sector में segment में हम कह सकते हैं जिसके लिए especially today I invited him to my show. He has worked with brands like Coca-Cola, PepsiCo and Mercedes-Benz. So sir, welcome to the show. Thank you very much. What a pleasure. Come to such a fantastic platform that you have created, Mandeep. And I'm so privileged and honored to be sitting with you today on Mandeep Kaur show. This is absolutely a privilege for me and thank you so much for inviting me. So मुझे आपकी ना privilege वाला word सुन के मुझे लगा कि वो लिखा होता है ना luxury brand management the world of privilege तो वो वाली बात हो गई है. So today I'm also feeling like कि मैं भी luxurious ही हूँ लगता है. Why not? अक्सर ही I keep on calling him, keep on talking to him. Sometimes I call him जब भी मुझे होता है कि मेरे पास कोई कस्टमर है या ऐसा बंदा है कि जो लग्जरी सेगमेंट में काम कर रहा है एंड आई नीड सम गाइडेंस ऑन दैट सो आई ऑलवेज ट्राई टू कॉन्टेक्ट हिम. रिसेंटली भी मैंने सर को बोला था कि मुझे थोड़ी क्लासेस आप दे दें. फिर मैंने सोचा कि आप क्लासेस मेरे शो पे ही दे दें क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इवन इन पंजाब हु आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर ब्रांड्स इन लग्जरी सेगमेंट एंड आपने तो इतने लंबे समय के लिए काम किया है राइट लग्जरी ब्रांड्स है उसके कस्टमर्स का थॉट प्रोसेस अलग है आपकी अप्रोच अलग है. सो समवन हु इज लुकिंग फॉर अ ब्रांड आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ अ लग्जरी सेगमेंट. सपोज रिसेंटली मैंने आपसे एक एग्जांपल भी शेयर की थी कि किसी का ऑयल का काम है बट ऑयल 100% प्योर है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है एंड दे वांट टू पोजीशन इट एज अ लग्जरी प्रोडक्ट कि जो दिल्ली एयरपोर्ट में भी पड़ा हो राइट. सो व्हाट इज योर टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर पंजाब में हम कोई ब्रांड शुरू कर रहे हैं और आज का यूथ सोच रहा है कि मैंने अपने ब्रांड को लग्जरी सेगमेंट में पेश करना है तो व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? Sure. See, first of all, I again feel honored and extremely privileged again, I would use it the word, for having been given the chance to work in such brands, which are considered to be the luxury brands. For instance, working in Mercedes-Benz itself was a great experience. Right. Again, working for Coca-Cola, PepsiCo, these are the three brands which are operating for more than 100 years. Right. They have evolved systems and processes which are country tested, which are time tested and human behavior tested. If we talk about luxury or premium brand like Mercedes, so it has taken all set of different thinking. They are more than 100 years old. But first and the foremost is the kind of product that you create. For anything to launch it into a luxury brand segment, the product has to be the top class. That is your first nukta or the first point that I want to highlight here, that the product has to be meticulously planned for its efficacy, for its quality, for its working, or whatever it is, product or service for that matter, which could fall into that luxury segment. One. Secondly, your mindset. You have to target it in front of people, who would accept it. It's a different ball game, it's not the ordinary. It is not for masses. It is for classes. That you target this product, You have to identify. There is something called identification of the class that you have to. For instance, if I have to sell a Mercedes-Benz car, which starts its value from, let's say, 40 lakh of rupees, and it goes up to 10 crores. The C-class Mercedes starts from 40 lakhs, and then we have the E-class, which is 1 crore, and the S-class, the bulletproof, is 9 crores. Right.
whom will you sell it? You have to have that, list, the prospecting list of people. It is the CEOs, or it is the businessmen, or it is the best of doctors, the best of architects, So these are the kind of people who value that product, that they feel it as an honor to possess that and create an image for them to drive that luxury. Right. So it's whom you target this product for. And then your relationship management. Relationship management with people, when you are focusing on a product which is a luxury brand, it's even to the extent of offering a cup of coffee. If I am dealing into luxury segment, if I am a sales head selling a luxury product, the kind of glasses, the kind of coffee that I will offer to my client has to be planned to be the best. Yeah. That is because the kind of meet and greet I create, the kind of ambience, the kind of welcome. So luxury starts so because they know that they are going to buy this product. If it is a watch which is, let's say, 5 lakh of rupees, so that the taste, the ambience, the aura, the music, the background that I have to create is top class. Yes. And that is how luxury branding starts. Because normally when we talk with people, right, sometimes I talk with different brands and people who are my customers for digital marketing. So mindset is not changing. They feel keeping a premium price is a luxury. I think it's not that way. No. You are going in all the details. Absolutely. कई बार लोगों को लगता है कि मैं प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई कर दूंगा तो वो लग्जरी है, वो प्रीमियम है, कस्टमर अपने आप हमारे पास ढूंढता आ जाएगा. No, pricing is not the only factor of creating luxury. Luxury. Rather, pricing is one of the least factors. Pricing comes with quality, no doubt. It's a value that you create. Pricing is based on the value that you are, the kind of product usage, the service and all that. But see, you have to be mindful of very, very small things. Got to be meticulously mindful of things that you create. For instance, I have dealt into luxury selling. I have dealt into luxury products. Even my own personality for that matter. Again, take an example, a Mercedes car, S-Class. So my own appeal, the kind of dress I wear, how smartly, how confidently I look, what is the kind of knowledge am I able to answer all the questions that you may ask. So my own level of preparation has to be so well prepared that I should be able to give all the answers to your queries. Yes. And I should be appealing. My sense of dressing, even to the extent that I should be smelling so well that you should accept a person coming from a luxury brand to sell a product like that. So these are small things. And level, there is something called features, advantages and benefits. We call it fab factor. Every feature of your product has to be so well accepted by the client that you would say, yes, it's an innovation. It is beyond imagination. There's something called intelligent lighting system. In Mercedes, again I call it. वो क्या है? Intelligent lighting system है जहाँ पे भी अंधेरा आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली मर्सिडीज की लाइट ब्राइट हो जाएगी. वो जो हमारे वो डिपर डुपर चलते थे वो सारे ऑटोमेटिक हैं. जहाँ पे भी फ्रंट से एक हाई फ्लैश लाइट आ जाएगी तो वो डिप हो जाता है. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड इनोवेशन, इज अनदर पार्ट ऑफ लग्जरी सेगमेंट. व्हाई समबडी शुड स्पेंड, जब 20 लाख की आपको एक गाड़ी मिल रही है अच्छी, व्हाई शुड यू स्पेंड 60 lakhs or 1 crore for that? The reason is innovation again, the kind of comfort, luxury, automation, and also वहाँ पे अभी there is something called, even to the extent के वो Mercedes में आजकल it gauges and it records the pattern of a driver. कि अगर ड्राइवर का पैटर्न ऐसा है कि वो एक्सेलरेशन, इट्स ऑल ऑटोमेटिक गियर्स, वो इस स्पीड पे इस पैटर्न से चलाता है, if little deviation is there from that, the system identifies it और वो उसको अलर्ट कर देता है. अगर मेरे को नींद भी आ जाती है, my pattern changes and there is an alarm immediately given there
that you are not alert on the driving seat. So this is innovation because they want safety. Your life is at stake. Yeah. So all these things matter. It's a holistic view of approaching things. Yeah. Your person, there is something called experience. मैं प्रोडक्ट तो बाद में खरीदता हूँ, मैंने गाड़ी बाद में खरीद, बट मेरा एक्सपीरियंस जो मैं वॉक इन करता हूँ शोरूम में, the kind of ambience which is created, the kind of coffee which is given, the kind of person who interacts with me, वो ही मैटर करती है. And the standards. For instance, this is a German brand, and all, for that matter, the all top 3 cars are German: BMW, Audi, and Mercedes. They're the top, and the Germans want precision to the accuracy. कि अगर जर्मनी में किसी का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास होता है मर्सिडीज खरीदने का, उसका इंडिया में भी एक्सपीरियंस वैसा ही रहना चाहिए. द काइंड ऑफ प्लेजर, द काइंड ऑफ म्यूजिक, द काइंड ऑफ केक जो काटते हैं, जो खुशी किसी को मर्सिडीज खरीदने में मिलनी चाहिए, वो चाहे वो अमेरिका में खरीद रहा है, चाहे वो जर्मनी में खरीद रहा है, चाहे इंडिया में खरीद. दैट इज द वे एंड एक्सपेक्टेशन. This is what I always want everybody to be clear on कि प्राइसिंग ज्यादा करने से ही लग्जरी नहीं होती. Right. आपका कस्टमर आपको कॉल करी जाए और आप आगे उठाओ ना, तो वो लग्जरी का स्टैंडर्ड वहीं पे गिर जाता है कि you have to be luxurious in every department, every way, every act you are doing, even what you are wearing, how you speak, how you are attending your customer, what you are offering. So everything matters. So you have a very good experience in terms of sales and marketing. सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए सर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एंड you have worked in FMCG sector also, and you have worked with a luxury brand also. So how the approach to the customer is different in both the sectors, right? Because there it's more cold calling, and there is it's a open people can buy. So what is your experience? I was very fortunate, again, as I said, to have worked in 3 companies, 3 multinationals which are more than 100 years. Coca-Cola, for that matter, more than 100 years. PepsiCo and Mercedes. But my having worked in FMCG in the early years of my career, I was into sales. And working for Coca-Cola company and learning the systems and processes of sales, I think it was my good fortune. मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग कोका कोला या पेप्सी से बेहतर सिखाए. या हाँ, हिंदुस्तान लिवर फॉर दैट मैटर कुड बी अनदर कंपनी विच इज अगेन FMCG 3 लीडर्स. All my bosses in Coca-Cola were ex Hindustan Unilever types. That is मेरा एसोसिएशन, मेरी लर्निंग, मेरी ट्रेनिंग, मेरे बॉसेस से जो मैंने सीखा. Mr. Rajiv Bakshi, my school types from PPS Naba. I had the privilege of studying from one of the best public schools in North India, Punjab Public School Naba. Mr. Rajiv Bakshi was my boss. He was the chairman for PepsiCo South Asia. When I was serving, he was our boss in India. So उनसे सीखने का मौका मिला. और ये जो चीज़ है, ये कंपनीज ना इतना मेटिकुलसली प्लान करती हैं. फॉर इंस्टेंस कोका कोला का जो प्रिंसिपल है, दे आर फॉर एवरीबडी. चाहे वो लोएस्ट रंग का कोई रिक्शा पुलर है या किसी कंपनी का CEO है, हैज टू टेक कोका कोला रिफ्रेशिंग, ठंडा मतलब कोका कोला, दे हैव टू ड्रिंक इट दैट वे. दैट. और मेरा ऑपरेशन क्या था सेल्स में, चाहे वो पान बीड़ी की दुकान है, चाहे वो 7 स्टार होटल है, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि ये दोनों जगह पे कोका कोला बिकना चाहिए. चाहे वो जो ठंडा बेचते हैं सड़क पे, उसके पास भी आइस बॉक्स अगर है तो वो भी कोका कोला. सो माई रेंज, माई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग वॉज सो ह्यूज. बट 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते थे जो हमको सिखाए गए और जो एक लर्निंग का भी पार्ट है. वन इज acceptability. The first, they're called AAA strategy in FMCG. चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, कोई भी हो, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री हो, बेवरेजेस की हो. Acceptability. First A is acceptability. The product should be so good. It should be refreshing. Feel good factor. और ठंडा, it should be विजी कूलर में लगा. अमृतसर में जैसे बैठे हैं, गर्मियों मई का महीना है, गर्मी इतनी होती है, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. मैं दुकान पे जाता हूँ, किसी ग्रोसरी शॉप पे जाता हूँ या बेकरी,
फ्रिज में ठंडा लगा हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है, जो दिखता है वो बिकता है। वो डिस्प्ले है और मैं कहता हूँ यार एक कोका कोला, गिव मी वन कोका कोला ठंडा, और वो ठंडा कोका कोला मिलता है एंड आई स्टार्ट ड्रिंकिंग। एक्सेप्टेबिलिटी, मेरे को पता है एडवर्टाइजमेंट हैज क्रिएटेड दैट फील गुड फैक्टर। द सेकंड वन इज अफोर्डेबिलिटी। द सेकंड ए अफोर्डेबिलिटी, हाँ ये जो 300 ml की बोतल है वो 40 रुपए की नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी 10 रुपीज, 20 रुपीज, वॉट एवर, अफोर्डेबल, ताकि अगर रिक्शा पुलर भी पीना चाहे तो उसको भी अफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज, इंपल्सिव यूज पे है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी। थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी, दैट आर्म्स रीच। हाँ, मेरे को कोई कहे कि टांगरा से आपको अमृतसर जाके कोका कोला मिलेगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा। यू नो, अवेलेबिलिटी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करता है। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से 100 कदम से पहले ही मैं निकलूं कि किसी भी दुकान पे प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। यू नो, एंड दैट इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस। हमारा जो सेल्स वालों का काम होता है वो वी इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन, कि बंदे को इतना लंबा दूर ना जाना पड़े कि उसको ढूंढना पड़े। यू नो, सो योर एक्सेप्टेबिलिटी, योर अफोर्डेबिलिटी एंड योर अवेलेबिलिटी, ये चीजों के ऊपर ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं। और ये एफएमसीजी, आपको अगर कोई राशन चाहिए या कोई आटे की बोरी चाहिए, यू शुड बी हैविंग इन द नेक्स्ट शॉप ऑफ ग्रोसरी। ये एफएमसीजी है, एफएमसीजी का जो प्रिंसिपल रहता है। तो हमने ये सीखा। और एक्सेप्टेबिलिटी तब बनती है अगर प्रोडक्ट अच्छा है, उसका रेफरेंसेस अच्छी हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है। पीपल, आजकल तो रिव्यू सिस्टम बहुत फास्ट है। आजकल तो यू नो कंपनीज का फीडबैक सिस्टम इज वेरी साउंड। यू नो, आज से 25 साल पहले when we started or 30 years back when we started distribution at such level, feedback system होता था, तब भी होता था। मगर आजकल तो कोई भी चीज है, कंपनी का इवन देता है कि इसकी रैंकिंग करिए कि हाउ गुड वाज द प्रोडक्ट। दिस इज हाउ वी आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स इन एफएमसीजी। How about in luxury segment? So I was talking कि FMCG में तो you ensured कि somebody who's even at 100 meters should be having the product, हर शॉप पे होना चाहिए, चाहे वो सोप है, सॉफ्ट ड्रिंक है, so we understand that. So how was the approach in terms of luxury brand? उसमें तो एक शोरूम है और साल में 100 कार ही हमने बेचनी है, right? So when we have a luxurious product, कि जैसे सपोज हम ड्रेसिंग की बात कर ले तो कई ब्रांड्स होंगे। जैसे हमारे अमृतसर में है एक ज्वेलरी ब्रांड है जिसने अपना फैशन प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, एंड दे आर इवन सेलिंग दी वेडिंग लहंगास फॉर 10-15 लाख, राइट? सो व्हाट शुड बी देयर अप्रोच इन फाइंडिंग द कस्टमर्स? They have to market the product in a manner because हमारे भी जैसे लग्जरी ब्रांड ऑफ कार्स भी, you can only identify a township या जिसकी पॉपुलेशन इतनी हो या काइंड ऑफ यू नो द वेल्थ विच इज क्रिएटेड इन दैट टाउन, तो वो भी प्लानिंग होती है। व्हेन मर्सिडीज केम इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आइडेंटिफाइड कि कौन से 10 टाउन्स होंगे इंडिया में जहां पे दे वुड स्टार्ट सेलिंग। यू नो, ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो आएंगी ही, बट देन सिटीज लाइक फॉर यू नो जहां पे वेल्थ इज वेरी हाई, यू नो यू हैव लार्ज नंबर ऑफ CEOs, फॉर इंस्टेंस पूना, Bangalore, Chandigarh, and they start with their operations like that. But then human need, I could be sitting in Amritsar, and if I have got the ability to afford something which is luxurious, which is premium, which is the top end, you know, I am sure I am even going to drive to Chandigarh also to buy that. See, human need, it's a pull factor. It's not a push factor. You know, we try to create अवेयरनेस अमंग द पीपल कि दिस इज अ न्यू ब्रांड। वो हम अपनी मार्केटिंग के मीन्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, ताकि लोग जो बठिंडा में भी रह रहे हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। उसका इंफॉर्मेशन का तरीका क्या है वो हम अपना ढूंढ लेते हैं स्टाइल। You know, sales and marketing has been your passion. सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि हर कोई अवॉइड ही करता है। जब MBA करते ना तो MBA मार्केटिंग गर्ल्स तो बिल्कुल ही नहीं लेती, सो पीपल अवॉइड कि हम फाइनेंस HR ये ले लें। सो एक सेल्स एंड मार्केटिंग में पैशनेट होना, उसमें परफॉर्मिंग होना
और ये ऐसा सेगमेंट है कि फ्रॉम वेयर पीपल रन फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट. सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर दैट इट बिकेम योर पैशन, जिसको अवॉइड करते हैं. हर कोई ऑफिस जॉब चाहता है. वो कहते हैं एसी लगा हो गर्मी में, है ना, सर्दियों में हीटर लगा हो, तो हम अंदर बैठे रहे, बस हमें वो अफसरों वाली फीलिंग आए. तो चाहे आप मर्सिडीज बेच रहे हैं, चाहे एफएमसीजी, यू नो हैव टू गो टू द मार्केट डिसिप्लिन्ड, और सब कुछ करना पड़ता है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है. सो हाउ यू आर पैशनेट अबाउट sales and it is cause of certain inherent reasons. I would rather call it, one is my upbringing in an environment where I was sent to one of the leading public schools, and my command over my communication and my language, speaking English and all that was a great advantage, having studied from that. So they encouraged me to participate in debates and declamations and all that. So I became a public speaker sort of, right from my schooling, you know, class 7th, जहाँ पे मैं इंडियन पब्लिक स्कूल इंग्लिश डिबेट में पार्टिसिपेट किया. सो आई लाइक्ड स्पीकिंग टू पीपल, यू नो, दैट वाज माय प्लस पॉइंट. दैट इज वन. सेकेंडली, जब मैंने करियर शुरू किया तो मेरे को अपॉर्चुनिटी जब मिली तो मेरे को एक ऐसा भी लगता था कि मैं लोगों को मिलने में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. माई पर्सनैलिटी वॉज गेज्ड इन अ मैनर वेयर आई कुड स्पीक वेल एंड कनेक्ट वेल विद पीपल. एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में ये बहुत दो चीज़ें हैं, स्पीकिंग एंड कनेक्टिंग. यू नो, बिकॉज एज यू राइटली सेड, अकाउंट्स में कोई बंदा बैठा है, वो ही इज सिटिंग एट द बैक ऑफ अ कंप्यूटर, तो वो अकाउंट्स बहुत बढ़िया कर सकता है. ऑपरेशंस में मशीन के पीछे खड़े हो, यू नो, R&D में बैठे हो तो आप अपने यू वर्किंग ऑन द लैपटॉप और समथिंग लाइक दैट. मगर एक सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जितनी देर तक आप बाहर ना निकलो, 3-4 बंदों को मिलो ना, और उनसे बात ना करो, और बात करने का ढंग, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, धीरे बोलना है, ऊंची बोलना है या कैसे, और उस सिस्टम में जब आ गए तो आपको एक मजा आना शुरू होता है. जब व्हेन सक्सेस इटसेल्फ ब्रीड सक्सेस. आपने ये जर्नी शुरू की 10 साल पहले. यू स्टार्टेड विद एन इनोवेटिव आइडिया, अनलाइक समबडी हु वुड हैव जॉइंड अ जॉब, यू नो, पोस्ट वंस MBA. बट आपने जब पहला क्रैक किया होगा की अकाउंट इन दिस बिजनेस, आई एम श्योर द काइंड ऑफ हैप्पीनेस और एक सेटिस्फैक्शन कि यार मैं एक डिजिटल मार्केटिंग में मैं एक अमेरिका की कंपनी को पकड़ के मेरे को ये आई एम प्रोवाइडिंग देम सॉल्यूशंस from Tangra. From Tangra I am talking about, you know, there's a from Tangra and that too a remote village near Amritsar. So the amount, okay, खुशी का ठिकाना नहीं रहता. और वो खुशी फिर एक से बाद दो, दो के बाद 10, 15, 20, 50, वही हमारा सेल्स का होता है. जब हमने पहली सेल क्रैक की तो हमको खुशी हुई कि यार हम तैयार त्यूर होके स्मार्ट स्मूथ बन के हमको बात करने का ढंग आ गया, और हम पहले सेल करके आए, और उस वो ऑर्डर रिपीट हुआ. उसने कहा जी दूसरी बार भेजोगे KDS बेदी को भेजना. वो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया. एंड तीसरी बार ऐसे ऐसे आपने क्लाइंट्स बनाए. द कॉन्फिडेंस इज मल्टीपल टाइम्स. वो एक ऐसा लगता है फीलिंग, एंड देन यू बिकम अ सीनियर, यू बिकम एन एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर. आप वो जो आपकी जो पैशन है, जो आपकी जो लगन है, वो जुनून है, वो आप अपने के साथ अपनी टीम में रेप्लिकेट करते हो. यू हैव सेलिब्रेशंस है. जब आपको मालूम है कि 30 तारीख को आज आपका मतलब के टारगेट फिक्स हो गया था महीने का, और आपने मतलब कि अचीव कर दिया, उसके बाद तो फिर स्काई इज द लिमिट. और उसकी जो सेलिब्रेशन होती है वो एक बार सेल्स में किसी ने देख ली तो फिर वो सेल्स नहीं छोड़ने वाला. को कोई पूछे कि ऑफिस में बैठ के अगर 8 घंटे काम करना है तो हमारे लिए वो चैलेंज है. बिकॉज जितनी देर तक मैं आज भी मेरे को 35 साल हो गए हैं नौकरी में करते, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ऑल दैट, चाहे वो FMCG है, चाहे वो लग्जरी है, चाहे कुछ है, मगर जितनी देर तक आज भी मैं 3-4 बंदों को, नए बंदों को मिलता नहीं और उनसे बात नहीं करता, उनके व्यूज, उनकी रिएक्शंस, उनकी आइडियाज. आज भी आपने एक इनविटेशन दिया तो मैं आ गया. मैंने कहा संडे आई शुड मीट, सी फॉर 103 बंदे, 113 बंदे कौन काम कर रहे हैं, एंड दे आर द फ्यूचर डिजिटल लीडर्स, एंड दैट इज हाउ इट पुल्स मी to a great extent. The kind of forte you have, especially in terms of अगर हम coaching की बात करें, so
what are your achievements or certifications in term of training? Yeah. And then how this passion came into you that you will train people on this. एक तो sales करना, Right. sales करके दिखाना, achieve करना अपने लिए, but अपना गुण किसी को भी देना, Yeah. उसके लिए भी ना you need a courage. It's a system supported opportunity. जब आप sales में थे, जब when I was in sales in Coca-Cola, फ्रंट लाइन सेल्स, मेरे पास 3 स्टेट्स थी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर मेरे पास रीजन हो गया दिल्ली से लेकर जम्मू तक. एंड व्हेन यू हैव टू बिल्ड टीम्स, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये लीडरशिप के ऊपर काम करती हैं बहुत ज़्यादा. तो उन्होंने ये सिस्टम वाज सो रॉबस्ट, वाज सो ट्रेनिंग ओरिएंटेड कि हम एक ड्राइवर कम सेलमैन से लेकर सीईओ तक ट्रेनिंग होती है वहाँ पे. एंड इट इज़ अ ट्रेनिंग ओरिएंटेड कंपनी, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रेशर, हर एक चीज़ नए मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नई इनोवेशन, नया प्रोडक्ट, न्यू लॉन्चेस. कोका कोला अकेला नहीं, देन देयर वाज लिम्का विच वाज टू बी सोल्ड, यू नो, देन देयर वाज products like juices, and there was tea, and you know beverages is a huge segment then, you know. So उसमें जैसे मेरे को स्कूल में एक मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर ने आइडेंटिफाई किया था कि आई कुड स्पीक वेल. सिमिलरली जब मैं कोका कोला में, आई हैव सर्व्ड 11 years इन कोका कोला सिस्टम, तो जब मैं कोका कोला में था तो उन्होंने देखा कि KDS बेदी कैन डिलीवर ट्रेनिंग्स वेरी वेरी इफेक्टिवली एंड पैशनेटली. तो उन्होंने मेरे को, आई गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम कोका कोला अटलांटा, द हेडक्वार्टर इन जॉर्जिया, जहाँ पे मेरे को सर्टिफिकेशन हुई. और फिर मैंने इंडिया में ट्रेन द ट्रेनर करके 11 ट्रेनर्स ऐसे और रीजन वाइज ट्रेन किए जो कि मेरे जैसा ट्रेनिंग आगे कर सकते हैं. एंड उसके बाद वो 11 ने और आगे 11 किए, बिकॉज इट्स सच अ बिग गेम बाय वे ऑफ मैन पावर कि एक शहर में, फॉर इंस्टेंस चंडीगढ़ में देयर आर, मतलब कि 35 ट्रक चल रहे हैं, 35 ट्रक चल रहे हैं चंडीगढ़ में, जो कि कम से कम 5000 दुकानों में कोका कोला सप्लाई करते हैं. सबसे ज्यादा 3 महीनों में बिकता है, अप्रैल से लेकर मई तक 60%. सीजनैलिटी सो हाई, गर्मियों में 3 महीने में 60% सेल हो जाती है, और बाकी 9 महीनों में 40% सेल होती है. इट्स लाइक अ वॉरफेयर कि हमने, बिकॉज सेल्स के टारगेट्स इतने होते हैं, ये 3 महीने में 60% अचीव करना इज अ बिग टास्क. सो यू हैव टू हैव मैनेजमेंट, यू हैव टू हैव द मोटिवेशन. उनको तरीके सिखाते हैं कि कैसे आपने रडार सिस्टम कैसे करना है. तो दैट इज हाउ यू हैव टू गेट द बेस्ट, एंड टू गेट द बेस्ट ट्रेनिंग इज अ मस्ट. दिस इज हाउ वी डू इट. यस, पेरेंट्स ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. wherever you reach, you always remember them. So what were your life lessons from your mother and father जो आज भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ? How true. Absolutely. I owe my success to my parents. You know, and next to God are my parents, or were my parents. Unfortunately, they are no more now. I lost them in last 6-7 years. But first is that a blessing coming from a Bedi clan. You know, we are from Dera Baba Nanak. We are, वैसे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ. But then icing on the cake is that I am from Dera Baba Nanak, ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਰਹੇ. ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਬਣ ਗਿਆ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਬੇਦੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ. ਐਂਡ my grandfather was in the Indian Army. He was a doctor, he was a colonel, and he had the honor of fighting the World War II from here. Indian Army, although British hundi si, he had gone there. So my father was a very senior Punjab government officer, and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ,
ਹੈਂ ਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਮਿਟਿਡ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PPS ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ PPS ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟੀਚਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ, ਯੂ ਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ MBA ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਜਰ, getting opportunity to get selected in companies like these multinationals ਚ, and I was very fond of reading। ਮੈਂ ਰੀਡਰ ਡਾਈਜੈਸਟ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਤੇ ਕਰੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੋਈ। I mean any interview, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ I have to get selected in the first chance ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ Coca-Cola ਸੀ, Pepsi ਸੀ ਜਾਂ ਜਸਟ Mercedes ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਾਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਡਿਡ ਹਿਜ਼ MA ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅੱਧੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੂਗਲ ਇਟ ਵਰਡਸ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਨਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵੈਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਟੀਕੂਲਸ, ਹਾਊ ਐਥੀਕਲ, ਹਾਊ systematic you are approaching your course of action into the business world। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ I consider my parents, always I thank them and I pray for their peace and happiness in their own world as such. Thank you so much. Nice. So what is your message for the audience listening to you? I would rather convey it this way, that God has gifted you something unique। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਸੇ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਲਸ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ MBA ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਇਟ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ I should hats off to you, my heartiest congratulations and compliments to you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਾਂਗਰਾ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਮੰਗਸਟ ਦ ਯੂਥ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ ਰੂਰਲ ਯੂਥ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੰਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੈਮਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਸਕਿੱਲਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਜੁਆਇਨਡ ਦ ਬਿਗੇਸਟ the brightest and the most progressive university, private university in the country. ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ 500 ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, there is a gap and we want to fill that gap to empower them to crack interviews, empower them to look for entrepreneurship opportunities, empower them to look beyond jobs and to earn and to live their own and to make their own livelihood. So this is our slogan and this is what we believe in. Great, great. Thank you, sir. Thank you so much. The pleasure is mine and I am so honored once again to be here at Mandeep Kaur Show. Thank you so much and Sat Shri Akal. ये थे प्रोफेसर KDS बेदी. सो वी हैड अ वंडरफुल टॉक विद हिम. मेरी एक्सपैक्टेशंस तो 100% अगे गया है शो अज का, बिकॉज मैं खुद बड़ी मोटिवेट हो गई हाँ. एंड लास्ट हिज मैसेज वॉज सो गुड कि वी नीड टू वर्क ऑन एम्पावरिंग पीपल. सो एम्पावर असी तां ही कर सकांगे जे असी खुद बड़े पैशनेट होवांगे, खुद बड़े नॉलेजेबल होवांगे, लर्निंग एटीट्यूड साडा होएगा. सो आई होप कि you must have learned a lot out of this interview. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ so that we can empower more people in our lives, and I'm again very thankful to him. Thank you for watching Mandeep Kaur Tangra show.